हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है नवंबर 9 2022, दिन है वेडनेसडे और आज हम करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पेज पे नीतीश वांट राइज इन 50% कैप ऑन कोटा। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है वो ट्यूसडे में पिच किए हैं कि फॉर इंक्रीजिंग इन 50% कैप जो रिजर्वेशन की है, said his party जनता दल यूनाइटेड had always advocated 10% quota to economic weaker section, which was a recent upheld by the Supreme Court। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। केरला हाई कोर्ट ने ऑफर किया इंटरिम रिलीफ टू वाइस चांसलर। जो कोर्ट रिस्ट्रिक्शन करेगा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बाय फ्रॉम पासिंग एनी ऑर्डर ऑन शो केस नोटिस इशूड बाय द वाइस चांसलर ऑफ 8 यूनिवर्सिटी टिल द डिसाइड ऑन द देयर रीट पिटीशन चैलेंजिंग द नोटिस। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया। केरला हाई कोर्ट ने ट्यूसडे में रिस्ट्रेन किया गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के एंड हिज कैपेसिटी एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द पासिंग फाइनल ऑर्डर ऑन द शो केस नोटिस ही issued vice chancellor of 8 university until the court take a call on the writ petition filed by the letter seeking quash the notice. Mr. Khan has issued the notice to vice chancellor cutting the violation university grant commission UGC norms their appointment। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। Nicobar project get assent for the diversion of 130 square kilometer forest। Union Territory Environmental and Forest Climate Change की मिनिस्ट्री ग्रांट किए इन प्रिंसिपल स्टेज 1 क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट ऑन ग्रेटर निकोबार आइलैंड फॉर मेगा 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एंड ट्रांसपोर्ट शिप फ्रॉम द एयरपोर्ट ए प्लान पावर प्लांट एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप। द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी अंडमान निकोबार आइलैंड इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया कि एरिया इज नियरली 50% ऑफ थिकेस्ट फॉरेस्ट ग्रेटर नोएडा आइलैंड दैट स्पेयर ओवर द 900 स्क्वायर किलोमीटर देयर विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन इन रिसेंट टाइम। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। सिविक बॉडी पोल आप बीजेपी अटैक ईच अदर ओवर गार्बेज डिस्पोजल। जो दिल्ली में सिविक बॉडी की पोल होने वाली है, उसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पे गार्बेज डिस्पोजल के लिए अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुंह जुबानी इंजाम लगा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे अरेस्ट में डियर केजरीवाल आफ्टर सुकेश राइटर अनदर लेटर। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्यूसडे में कहा है कि कैंपेनिंग आज रन बिफोर द पंजाब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अर्ली दिस ईयर टू पोर्ट्रे हिम एज टेररिस्ट। Now, just before the assembly in poll in Gujarat, he was considered with the civic election in Delhi, was being accused of corruption. Kejriwal is neither a terrorist nor a corruption. He is a daring to people. This is the bother the BJP Delhi CM and in tweet in Hindi। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 83 cases under UPA registered since 2005, दिल्ली पुलिस टेल्स हाई कोर्ट। जो चार्जशीट फाइल किए गए 40 यूपीआई केस विद इन द 19 days। द पुलिस इन रिस्पांस टू कोर्ट ऑर्डर द सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ केस एक्सटेंशन शॉर्ट टू द पीरियड ऑफ द एक्सटेंशन ग्रांटेड। द दिल्ली पुलिस ने इंफॉर्म किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट पे रजिस्टर किया गया 83 केस अंडर द एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपीएस इन 2005। of the total 83 cases, 40 have been decided, another 29 have pending panel with the remaining 14 cases pending investigation। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। न्यू क्रैब स्पीसीज फाउंड इन तमिलनाडु। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट हो सकती है, तो इसको आप पढ़ने की जरूर इच्छा करें। रिसर्च हैव डिस्कवर a new species of the intrusive crab at the mangrove of the Panargavi Patai near the Bhillar river in the Kadalora district, and species have named to Pesto the Helios Annamalai in recognized as the Annamalai University 100 year of service of education and research। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फास्ट प्राइवेट डेवलप रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च। जो फास्ट प्राइवेटली डेवलप है रॉकेट विक्रमा साराभाई proposed to create history of undergoes final preparation of ISRO Indian Sponsor Organization launch pad of Sriharikota launch between the November 12 to 16। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया।
Kerala to amend IPC to curb the printing of indecent matter. State government take cue to law introduced Tamil Nadu and Odisha, currently printing and publishing and distribution of scribblers matter intent of for blackmail. Taking cue for the legislation introduced in the Odisha and Tamil Nadu, Kerala government proposed किया है कि amend करेंगे Indian Penal Code IPC and Code of Criminal Procedure and bring in the legislation to curb the printing, publishing and distribution of glossy incident and scrucious matter in the टेंड फॉर द ब्लैकमेल, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. Bengal, Bihar to remaining in red zone for the aerosol pollution in 2023 study. Recently, the scientists from the Bose Institute of Kolkata revealed किया है कि aerosol pollute in Kolkata in NC epithet rise with 8% continue remaining in high valuable red zone. This is the second highest forecast aerosol pollution vehicle in country after Bihar. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो एडिटोरियल की है. ए नेसेसरी सिग्नल जो COP20 की मस्ट बी अंडरस्कोर द सिक्योरिंग वर्ल्ड फ्यूचर गेट कॉस्टियर विथ टाइम. जो 47 सेशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP इज अंडर वे एट द इजिप्ट सी साइड सिटी शर्म एल शेख वेयर द ओवर 2 weeks government head of government diplomats business heads activities journalists and lobbyists will converge attempt to each ahead of the global howl of the energy consumption and improve the earth changes against the catastrophic climate change. Will the every COP end with the hard bearing documents and essential principle remaining the constant? How the ensure to all country contribute to paying for the world take to avoid the consequence of global warming without the compromising the economic development while accounting for the historical responsibility of exacerbation crisis. There are several countries, especially island nations, that stand to lose the most from the global warming without having a role in causing it. Given the COP agreement non-binding of the single mandatory state and non-violent phase and unusual such as the United Nations unilaterally exiting the agreement only to join again, this meetings also serve as the uniform of public posturing. Country announced their the commitment to lofty environmental goals, but do little to exercise the often string the measure of the entire because their potential involving the political backwoe. However, the COP27 do serve as an effective nudge. Even decades ago, link between the global warming and climate change have agitated crises. Now the no country challenge the fundamental science. A fossil fuel future is direction to world improving toward. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं. नो कॉन्सेशन इज द ड्रिलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी. जो इंडिया के डिसीजन किया कि होस्ट करेगा स्पेशल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी लास्ट मंथ हेल्ड इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली. इट फोकस ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट प्लान्ड बाय गवर्नर to give the counter-terror diplomacy to greater push. Later this month, New Delhi hosts the third session of the No Money for Terror NMFT conference will take to the look at the attacking future model of terror financing in December when the India take over the United Nations Security Council presidency for the last time before the 2 year term of council and India will chair the special briefing and global counter-terrorism architect looking to challenge ahead. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देगी, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं. Will the focus on the future for fight against terrorism? It's important to take some challenges that already exist, especially when the world attention is consumed by the war in weak Europe and dealing with the aftermath of COVID-19 and global economy recession. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. सेफ्रॉन स्ट्राइड जो बीजेपी सक्सेस के वे टू लॉट ऑफ द लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ इट रिवाइवल. जो रिजल्ट ऑफ बाई इलेक्शन हुआ है 7 असेंबली seat में across the 6 states held on the November 3 and encouraging the for BJP while all the opponents have reason to worry. The BJP on 4 seat 3 that it held the previously additional seat backward by the defectorial 2 party. The result was a sort to arm of party that is the defending the truth in 2 states that are going to poll Gujarat and Himachal Pradesh. In Haryana party on Aam Aadmi Party Adhampur, which was the remaining the Bhajanlal Fumli since 1966. BJP candidate is the grandson of former Congress staff. BJP retained the Gopalganj in Bihar, but the time without the alliance with JDU, now in power with the state with RJD,
In Mokarama, where RJD JDU alliance candidate won, BJP gives a close fight, indicating that the remaining formidable event after the end of alliance with JDU. Gola Gorakhnath, Uttar Pradesh, BJP won with increasing margin, showing that the stress fight against the Samajwadi Party it has an edge, and the BJP come second in Telangana. Manguru constituency, who is trying to despise the Congress as the key challenger of the implementing Telangana Rashtriya Samiti in Odisha party retained Dhamnagar with an increased margin. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। साफरन की जो स्ट्राइड हुई है, जो रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुआ है 7 असेंबली के 6 स्टेट में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। आफ्टर डस्ट ए क्लियर पिक्चर ऑफ अग्निपथ डायरेक्शन, जो क्लाउड बस्ट है रोज फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ अग्निपथ स्कीम इज फेल्ट नाउ सेटल्ड. Under this plan, around the 50,000 soldiers Agniveer will be recruited annually, and most of leaving the service 4 years, and only 55 will be returning in service another 15 years as permanent cadres. With the pressures of time, how is possible revive the scheme is now more mature and pragmatic manner, especially since the first batch of Agniveer on now were to training center and recruitment realize conducted in Agniveer have been positive response both among the boys and girls. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो इंडिया के चीफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने लिखा है, तो आप इसे जरूर पढ़ने की कोशिश करें। और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। कंटेंट मॉडर्नाइजेशन थ्रू को रेगुलेशन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेगुलेट करेगा मैनेज यूजर टू कंटेंट on their website. They remove, authorize and suspend the user account to violate the term and condition of their platform. When user post is taken down or their account is suspended, they can challenge us a decision. Similarly, when the user is harmful illegal content online, they can issue the platform. Some platform have complaint residual mechanism for the addressing user grievance. For the instance, Facebook has set up the oversight board इंडिपेंडेंट बॉडी या सिक्योरिटी कंटेंट द मॉडर्नाइजेशन प्रैक्टिस, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया, आप इसे सेल्फ पढ़ने से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पीएफ फैशंस पे, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द केस वेयर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपील वेरियस ऑर्डर फेवरिंग द एम्प्लॉयज हु ऑल स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्डर, who will be execute and who will be union government agreement. जो thousands of workers है individual जो eligible person under the employment pension scheme 1995 EPS 1995 employees provident fund organization है, those who already draw the PF pension have been letting the various cash for several years seeking invoke of the pension in the scheme by which the pension benefit can be steadily increased. The three judge bench of the Supreme Court ने रूल किया कि मैटर नवंबर 4 में केस फॉर द EPO had the various order favoring the employees issued by the Kerala, Rajasthan, Delhi High Court. The order provide the relief to some employees, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया। What did the employees litigate? जो offset the increasing pension provided fund the EPS 1995 which was the 8.33% from the employee contribution, and employees PF account must be remit into the pension fund on actual basis space. Dearness allowances and retaining allowances are questioned for the higher pensions will be made in the form of the option executed by the both employees and employer, but due to the information asymmetry, most members have did not exercise this option and have contributed to pension fund only within the salary cap, which was revised to the 6,500 to the 15,000 8 years ago, not to the actual pay. रिड्यूस द पेंशन बेनिफिट शार्पली, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देगा कि इसके वजह से इम्पैक्ट किया गया ऑर्डर के, और हाउ द कोर्ट रेस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट डिमांड्स, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ने की कोशिश करें। शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर द एडोलसेंट? व्हाई आर द कंसेंसुअल और नॉन एक्सप्लोरेटिव सेक्सुअल एक्ट आल्सो कमिंग अंडर द रेडार ऑफ पॉस्को एक्ट एंड आईपीसी? वेयर आर द ग्राउंड रियलिटीज? व्हाट आर द कोर्ट ऑब्जर्व? नवंबर 4 में धारवाड़ा बेंच ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडमिट किया है filed under the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 said the Law Commission of India would have to rethink age criteria to think into the consideration of the ground realities. The aspect of consent by the girl of 16 years but who below 18 would have to be considered as to be noted in needed offence under the Indian Penal Code और POSCO Act, तो उसके ऊपर आर्टिकल जाएगा, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के as tension mount
some Raj Bhavans are on the warpath. The governor, a high constitutional authority, he need to function within the four walls of the constitution to be a friend, philosopher and guide of his गवर्नमेंट. जो केरला गवर्नमेंट में वहाँ की सीएम और वहाँ के जो गवर्नर के बीच में खींचातानी चल रही है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और एक दूसरे के पावर को इन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया जो टेंशन माउंट की गई है राजभवन में और द वार पथ पे, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया. आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. सेंटर एड्यूल्यूट फॉरेन ओरिजिन इन एफिडेविट ऑन दलित, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम. It is justified negligible difference between the scheduled caste practicing Hinduism, Sikhism, Buddhism and those practicing other religions. जो एफिडेविट फाइल किया गया यूनियन गवर्नमेंट को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बेंच के हेयरिंग करने के केस में inclusion of Dalit, Christian and Dalit Muslim on the list of scheduled caste contribute to the revival juncture leading to lack of the clarity and argument defining the current criteria determining which community can be classified as a scheduled caste. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल जाएगी, आप इसे से पढ़ सकते हैं. चीफ ऑफ इंडिया फ्रेंच एयरफोर्स ज्वाइन ऑनगोइंग गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज. जो चीफ ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच एयरफोर्स के ट्यूजडे में ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज किए हैं गरुड़ 7 इन जोधपुर. विल द इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल B.R. Chaudhary flew route to the IMF fighter. French Air Force Chief General Stephen Mike flew the IF Sukhoi 30 and Mk-1 फाइटर. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया. ग्रूड एक्सरसाइज जो जयपुर में हो रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल है जोधपुर पे. जापान होस्ट नेवल एक्सरसाइज. मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जॉइंट इन्वॉल्व है इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए begin the Tuesday International Fleet Review and 18 Western Naval Pacific Symposium hosted by the Japan and conclude with the 13 to 27 countries adopting respectively. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. विजिलेंट मीडिया कैन इम्प्रूव गवर्नेंस. मनमोहन सिंह, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने विजिलेंट मीडिया के ऊपर क्रिटिकली इम्प्रूवमेंट गवर्नेंस एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू राइज एस्पिरेशन ऑफ न्यू गवर्नेंस जनरेशन ऑफ एक्सपेक्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बी मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. न्यू पैनल लॉ पैनल में भी एग्जामिन डिमांड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड. The day after Gujarat government announced the setting of the committee on implementation of the Uniform Civil Code (UCC), BJP promising UCC in poll-bound Himachal Pradesh, Union Law Minister finally made appointment at 22 Second Law Commission likely to examine the issue in details. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया. USA, Belgium to question India on CAA, minority rights and hate speech at the HRC. जो ट्रीटमेंट है जर्नलिस्ट की और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कस्टोडियल टॉर्चर जो एक्सपेक्ट कर रहा है डोमिनेट टू यूनिवर्सल प्रीडिक्टिव और इंडियन एट द ह्यूमन राइट काउंसिल जिनेवा दैट विल बी टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल जाइए. यूएसए बेल्जियम ने क्वेश्चन किया इंडिया के सीए और माइनॉरिटी राइट और हेट स्पीच के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन में जिनेवा में. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. इन हिमाचल फाइट इज बिटवीन मनी पावर एंड बीजेपी एंड पावर ऑफ पीपल व्हिच विद कांग्रेस. इलेक्टोरल बॉन्ड अमेंडमेंट इज मंकी ऑफ द ट्रांसपेरेंसी. ये सब ऑनलाइन पॉलिटिकल न्यूज है, तो आप इसे नहीं पढ़े तो अच्छा है. CSIR NGRI to install early warning system against the flood and rock slide and avalanche in Himalaya state. The National Geographical Research Institute NGRI or Council of Scientific and Industrial Research being held to study to place an overly armed system in Himalayan state against the measures of sudden flood and rock slide and landslide and glacial lake burst and avalanche and the prevent the Chamoli kind of disaster in future. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. इंडिया रेडी टू हेल्प de-risk रशिया यूक्रेन सिचुएशन, जयशंकर टेल रशिया. The external affairs minister S. Jaishankar do not take any specific effort to mediate during his talk with the counterpart in Moscow, but called for the dialogue and diplomacy between the two warring nations. He said Russia is a steady and time-tested partner. जो रशिया है इंडिया के स्टडी एंड टाइम टेस्टेड
पार्टनर है। एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने डिफेंडिंग किया है द 20-fold इंक्रीजिंग इंडिया ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री दिस ईयर द आफ्टर मीटिंग विद रशिया फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रेड मिनिस्टर डेनिस मंत्रुबा इन मॉस्को ट्यूसडे। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। उसके साइट में और एक आर्टिकल है, मोदी अनवील लोगो थीम साइट फॉर G20 प्रेसिडेंसी। जो अपकमिंग प्रेसिडेंसी है G20 की इंडिया को मिलने वाली है, तो मैटर प्राइड एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्यूसडे में, और मोदी ने मेड किया है कि रिमार्क ऑफ अनवेलिंग द लोगो थीम वेबसाइट ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ऑनलाइन इवेंट। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। नॉट बैन against the destroyed of livelihood Congress, जो लंचिंग है शार्प अटैक ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन द 6th anniversary of announcement of demonetization and Congress President Mallikarjun Kharge Tuesday said the note bans was the biggest destroyer of the livelihood and small business। उसके ऊपर ये आर्टिकल देखिए। जो डिमोनेटाइजेशन किए गए थे कांग्रेस ने उस पे तीखी प्रतिक्रिया की है और उसको कहा है कि वह देश के सबसे खराब दिन थे वो अब ब्लैक डे के तौर पे मनाया गया है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो वर्ल्ड अफेयर की है। प्रेशर माउंट ऑन इजिप्ट गवर्नमेंट टू रिलीज रिसेंटली ऑन हंगर स्ट्राइक। कायरो की न्यूज है। चाइना फ्लो ऑफ द न्यू अप्रूवल पैसेंजर जेट एट मेजर एयरशो, ये बीजिंग की न्यूज है। जर्मनी वांट टू ब्लॉक चीप फैक्ट्री सेल टू चाइनीज फिल्म, ये बर्लिन की न्यूज है। Erdogan want to Swedish action on the anti-terrorism to clear NATO bid, Istanbul की न्यूज है। UN chief slam companies engaging in toxic cover up. The frame cannot be claimed to be net zero if they have invest in fossil fuel or causes the deforestation, say the COP27 report. Guterres asked to the Stockholm to operate the net zero pledge in the year to complete with the UN norm. जो UN के चीफ है कॉल किए हैं ट्यूसडे में कि एंड टू टॉक्सिक कवर अप जो कंपनीज करती है स्वाइपिंग द रिपोर्ट आज दे द क्लेम नॉट टू बी जीरो इफ दे इन्वेस्ट इन न्यू फॉसिल फ्यूल causes the deforestation and offset emission instead of the reducing them। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। जेलेंस्की ओपन टॉक विद रशिया बट ऑन कीप टर्म्स। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो सजेस्ट कर रहे हैं ओपन पीस टॉक रशिया के साथ में, सॉफ्टिंग द रिफ्यूजल ऑफ नेगोशिएशन विद मॉस्को लॉन्ग as Vladimir Putin in power while the seeking keep core demands। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। US government goes to midterm polls with Biden agenda at stake and Trump with it with hurdle Democratic President Joe Biden agenda and serve to the springing of another house run by the Donald Trump। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। अच्छा नेक्स्ट आर्टिकल पे रनिंग प्रपोज क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी इन श्रीलंका। The point to the lack of capacity as the biggest obstacle to implementation of climate action plan, श्रीलंका प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे on Tuesday propose करेंगे setting to international climate change university in श्रीलंका with an unclarity in situation in Maldives। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं बिजनेस पेज में। बैंक प्राइसिंग रिस्क poorly in rush to get deposit lend more, SBI घोष। जो risk premium over the above core funding cost are not fairly acknowledged the inherent credit risks according to report by the bank group chief economy advisor. Note that the deposit growth and lender it is lagging the behind the decade high credit expansion. The media's liquidity is tanking and the decadal high credit growth है more than 80% हो चुकी है और deposit growth failing way behind। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ चीफ इकोनॉमी एडवाइजर सूर्यकांत घोष ने वार्न किया द बैंक आर नॉट एडिक्वेटली प्राइसिंग देयर रिस्क ऑन बोथ देयर एसेट एंड लिक्विडिटी साइड। उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। रेट लाइकली हाइक्स अनलाइकली टू इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी ऑफ होम लोन्स से ICRA। ongoing the rate hike will unlikely to impact repayment by the home loan borrower despite increasing a monthly installment, रेटिंग एजेंसी ने कहा है। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। ऑयल स्लिप ऑन रिसेशन फियर कोविड इन चाइना। जो ऑयल प्राइस में स्लिप किए गए ट्यूसडे में रिसेशन कंसर्न किए और वर्जिंग द कोविड-19 आउटब्रेक इन चाइना स्पार्क फियर ऑफ लोअर फ्यूल डिमांड ओवरिंग द सप्लाई वरीज। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। रिलायंस
इंडस्ट्री लिमिटेड ने मीट किया सिटी टू होस्ट द 4 जापानीज फिल्म। जो मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में है मीट सिटी full owned by the Reliance Industries Ltd said that developing the greenfield smart city at Jajar near Gurugram, Haryana that will be host 4 Japanese companies in inaugural industrial township। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। MRF Q2 net profit slide 32% to 124 crore as input cost are used। MRF LTD ट्यूजडे में रिपोर्ट किया गया 32% ड्रॉप की गई सेकंड क्वार्टर स्टैंड अलोन प्रॉफिट 124 करोड़ अमाउंट टू इंक्रीजिंग इन इनपुट कॉस्ट। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। डोनफासा इंडिया एम टू 5000 करोड़ रेवेन्यू। इंडियन सब्सिडरी एंड डेनमार्क बेस्ड क्लाइमेट एंड एनर्जी सोल्यूशन मेजर डोनफासा प्लानिंग कर रहे मोर देन डबल द रेवेन्यू 5000 करोड़ बाय द 2025 थ्रू द टॉप 3 बिजनेस सेगमेंट सेट द टॉप ऑफिशियल। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। नामन्या सीएम हेड टू जीएसटी पैनल नॉट डील। तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पी तांगिया राजन ने ट्यूसडे में कहा कि प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कन्वर्नर ऑफ प्लान लुकिंग टू जीएसटी काउंसिल रिफर टू इशू द सो ऑफ्टन लीड टू द डिले इन इवन कन्वर्जिंग मीटिंग। तो उसके ऊपर आर्टिकल देंगे। अब चलते हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स पे। नाविडिया ऑफर्स न्यू चिप फॉर द चाइना दैट मीट यूएसए स्क्रब। यूएस चिप मेकर नाविडिया क्रॉप ने मंडे में ऑफरिंग करेगा न्यू एडवांस चिप इन चाइना to meet to the recent export control rule aim to keeping the cutting edge technology out of the China hands। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया। KKR to invest $400 million in the secretariat renewable। जो KKR है इन्वेस्टमेंट कंपनी का कि उससे साइन करेगा डिफेंडिंग एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट $400 million in secretariat renewable and decarbonization platform that plans to energy transition by the providing clean energy solution for energy intensive industries। उसके ऊपर आर्टिकल दिया। छोला फाइनेंशियल होल्डिंग Q2 नेट कॉन्ट्रैक्ट 7% 606 करोड़। चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग जो CFHCL है कंसोलिडेट करेगा न्यू प्रॉपर्टी in second quarter ended the September declined 7% 606 crore from the year early period। तो उसके ऊपर आर्टिकल जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो स्पोर्ट की। तो आज के दी हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पे इतनी। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।